It is all based on the reactivity of metals, जिसके लिए हम लर्न करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, आपको याद करनी है। इसके लिए निमोनिक भी है। अगर आपने किसी और निमोनिक के थ्रू किया है वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं किया है तो आपको याद करना है। दिस इज, दूसरा कलर यूज करो। दिस इज केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा के से पकाता है। एंड देन कॉपर, चापा word you need to learn. ठीक है, this can be learned with this single word CHAPA. copper, mercury, silver, platinum, gold. ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या बताती है कि जो इस सीरीज में टॉप पे एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। आप उनको वो फटाफट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ वो कोल्ड में भी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, हॉट वाटर एंड देन स्टीम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। क्या आपने फिल टेबल? I can't see everybody writing. Try to fill this. See, yes. So first column is about heating with oxygen. So जो बहुत highly reactive elements हैं, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, they burst into flames and the oxides, they are formed vigorously. फटाफट से oxides बन जाती हैं। लेकिन जो आयरन है, आयरन की ऑक्साइड बनती है लेकिन थोड़ा स्लोली बनती है और ये ग्लो करता है। जब इसकी ऑक्साइड बनती है ये ग्लो करता है, राइट। और जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और इनमें ऑक्साइड बनती है, लेकिन ना ये ग्लो करते हैं ना ये फ्लेम्स में बर्स्ट करते हैं। तो ये सब क्या रीजन है? 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स जो है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी। ठीक है। आफ्टर दिस कम्स द रिएक्शन विद वाटर। सो ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, they produce hydrogen with cold water, with cold water, right? कौन? सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हाईली रिएक्टिव वाले कोल्ड वाटर के साथ। और उसके बाद लेड तक के ये एलिमेंट्स, दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन with steam and जो इससे कम रिएक्टिव हैं, they do not show reaction with water or steam, right? And about their reaction with acid, जो सोडियम पोटेशियम है उनका रिएक्शन है वॉयलेंट। जो उससे नीचे हैं, they show very slow reaction, और जो उससे भी बॉटम पे हैं जो, they do not show reaction। तो ये बिहेवियर जो है, that is attributed to the chemical properties में reactivity difference। ठीक है, now take out your assignment, we will do the questions। I give you 5 minutes, try doing first few questions, then I'll discuss। Okay, let's discuss first 5 questions। So first question is, your mother cleans a copper vessel and notices greenish patches on its surface. What does this indicate? Why are these green patches formed? What is the answer? Raise your hands who would like to answer. Okay, Aristotle, a girl is raising her hand. Last bench, come forward. Get ready with the answers for next questions, so that we could discuss maximum of them. Yes, read out the option louder. Copper reacted with moisture and carbon dioxide. ठीक है, वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है बेटो, जो ग्रीन लेयर होती है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A freshly cut surface of iron shines but becomes dull quickly. Why? What happens to the iron? पहले तो वो बहुत सुंदर दिखता है,
कुछ टाइम में वो डल हो जाता है. Raise your hands who would like to answer. Yes, Alessandro, house, last bench. Ajo, any one of you. None the option. What is the, read out the option. None the. No, sitting with the option. Give me the answer. Ma'am, iron forms a flaky oxide that exposes fresh metal. Yes, it forms flaky oxide. तो dust बोलते हैं जिसकी वजह से डल पड़ जाती है. ठीक है, very good. बेटो. Next question is, why is magnesium ribbon cleaned before burning in the lab? Who would answer this? In house or in his hand? Forward, any one of you is raising a hand. Good. I'll mute. Okay. Yes, Emerson. Yes, please. A boy is raising his hand. Come forward and give me the answer. Why is magnesium ribbon cleaned before burning in the lab? Option B option है. option नहीं बोलना है. Read it out. What is the answer? Clean. अहानगढ़. Okay, sit please. The reason is जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है and it has to be removed, or any other kind of impurities which is sticking to that ribbon that have to be removed ताकि रिएक्शन पे अच्छे से हो सके. तो आंसर is B, to remove oxide coating so it burns easily. ठीक है. Come to third question. Sorry, fourth one. While burning magnesium ribbon, students see a bright white flame. Then white ash left behind is, what is formed when you burn the magnesium ribbon? That white ash is of magnesium oxide. The option, magnesium oxide. ठीक है? Then sodium is stored in kerosene because जैसे हमने इसमें किया वो वाटर के साथ बहुत रिएक्टिवली, बहुत विगरसली वो रिएक्ट करता है. सो उसको हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उसकी वाटर के लिए बहुत एफिनिटी है रिएक्ट करने की. सो वी कैन नॉट स्टोर दैट इन वाटर, वी कीप इट इन केरोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Why does iron rust faster in rainy season compared to summer? Who will tell me? Yes, Confucius. Is that Confucius? Yes. इसमें से बहुत सारे बच्चे हुए they want to answer. किसका रोल नंबर सबसे एंड में आता है? लास्ट रोल नंबर जो भी बच्चे हैं they are raising their लास्ट रोल नंबर जिसका भी है वो आएगा. Yes, beta. So
Your question is? मैम सी ऑप्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर मॉइस्चर इन एयर। अच्छा ठीक है, बताओ फिर मॉइस्चर से होता क्या है? लेकिन अभी रुको, मॉइस्चर से कैसे फास्टर होते करोजन? कुछ पता है? मैम बिकॉज इन द रस्ट देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑक्सीजन एंड वाटर। Yes, they react with the oxygen, they form oxide, they react with water to form hydroxide, ठीक है? और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और उसकी वजह से बनता है रस्ट। रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है Fe2O3.XH2। तो उसमें क्या, Fe2O3 मतलब ऑक्साइड बन गई आयरन की, तो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बन गई, और साथ में वाटर भी होता है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है? So answer is that it reacts violently with water and oxygen. Then comes sixth question. Why does iron rust faster? Done. Sixth we've done. The seventh question. It's a student left an iron nail in tap water for 3 days and found reddish brown flakes, but not in distilled water. What happened? Yes. Yes, Emerson House, a boy is raising his hand. Please come forward. Fatapat say yes. Also be tap water has salt which supports the तो अब ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन, तो होता क्या है? ऑप्शन तो ठीक है, पर हुआ क्या? जैसे मॉइस्चर, तो टैप वाटर में ऐसा क्या है कि रस्टिंग फास्टर होगी? मैम सॉल्ट। क्या रोल होता है? ओके, मैं बताती हूँ, बैठो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, पर आप याद रखो कि जैसे पानी है ना, पानी की प्रेजेंस में रस्टिंग फास्टर हो रही थी, तो पानी में ऐसा क्या होता है, आयंस होती हैं। H2O is water in which H positive and OH negative ions, ions सुनिए आप लोगों ने ions के बारे में, atom and ions you know ना, तो ions जो हैं they make the corrosion, process of corrosion faster, ठीक है? इसीलिए वो जल्दी, टैप वाटर में सॉल्ट होता है, सॉल्ट में आयंस होती है, तो रिएक्शन जल्दी होता है और corrosion भी जल्दी होती है, ठीक है? Come to eighth question. 3 test tubes, iron nails plus dry air, iron nails plus water, and iron nails plus air plus water. ये 3 केसेस हैं। आपको बताना है, the diagram shows that rusting requires, अच्छा ये बोलता है कि only test tube C shows brown flakes. C में क्या था, आयरन नेल्स और एयर और वाटर था। तो हाँ, अभी हमने बोला कि रस्टिंग के लिए व्हाट डू यू नीड एयर, यू नीड वाटर, टैप वाटर हो तो और भी अच्छा है, मॉइस्चर वाटर ही होता है, तो ये सारा करोजन के फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में करोजन फास्टर होती है। सो इट आंसर इज सी, दैट इट नीड्स बोथ एयर एंड वाटर, इसीलिए उसमें रस्टिंग फास्टर हो रही है। Come to ninth question. Lemon juice is kept in aluminium vessel in many homes. Why doesn't aluminium get damaged easily? Yes, who would answer this? Aluminium vessels, why don't they get damaged easily? अभी मुझे डेनेट हाउस में से किसी ने आंसर नहीं किया है। Yes, please come. The student is raising his hand. Please come. Dennett. What is the answer? Acids don't react with aluminium. Acids don't react. Acids don't react with aluminium. Okay, कौन सा एसिड इसमें है? Aluminium. एसिड कौन सा है जो ये ऑप्शन आपने चूज किया है?
बोलो। सिट्रिक सिट्रिक एसिड। वैसे एक बात बताऊं, सिट्रिक एसिड। ओके ओके फाइन, आपको एक बात बताती हूँ, जो एल्यूमिनियम है वो एक एम्फोटेरिक वो रहता है, मतलब वो एक ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स में से नहीं आता, थोड़ा सा उसका ऐसा बिहेवियर है कि दोनों तरह के बिहेवियर वो शो करता है, और ऐसे बिहेवियर को हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। जनरली क्या होता है, मेटल्स जो है, जो उनके कंपाउंड्स भी होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल्स जो है वो उनके कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। लेकिन एल्यूमिनियम ना बहुत अच्छा मेटल है, ना तो वो नॉन मेटल है, तो उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, तो वो एसिड और बेस के दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इट फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम के बाहर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है, और इस ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन की वजह से फर्दर रिएक्शन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दैट ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड व्हिच प्रिवेंट्स अटैक ऑफ एसिड। राइट, वैसे एल्यूमिनियम के वेसल्स को स्टोर करने के लिए नहीं सजेस्ट किया जाता, बिकॉज अगर कोई भी हम उसमें खाना बना के स्टोर करके रखते हैं तो उसमें जो भी एसिड वगैरह, जैसे हम बहुत सारे स्पाइसेस यूज करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, तो वो अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो थोड़ा सा पॉइजनस चीजें बना देता है। तो इसीलिए अभी बहुत ऐसा बोला जाता है कि कॉपर की वेसल यूज कर लो, ठीक है, पर स्टोर मत करके रखो किसी भी चीज को। स्टील बेटर है एल्यूमिनियम से फॉर कुकिंग। नॉन स्टिक पैन में भी प्रॉब्लम बोलते हैं कि नॉन स्टिक के ऊपर एक केमिकल की लेयर होती है, हम उसको बोलते हैं पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब उस लेयर अगर वो डैमेज हो जाए, क्योंकि वो एक केमिकल है, ठीक है, अगर वो लेयर डैमेज हो जाती है तो फूड में मिक्स हो जाती है, और फिर हम वो केमिकल कंपाउंड्स वो हमारे फूड का पार्ट बन के हमारे अंदर चले जाते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर दैट कम टू 10th क्वेश्चन। A student drops pieces of zinc into dilute hydrochloric acid during a lab activity. Tiny bubbles start forming on the zinc surface. To identify the gas, a student brings a burning matchstick near the mouth of the test tube. The gas produced is, can you tell me, read the question properly and tell me what gas is produced here? And you also tell me who would like to answer this. Which gas is produced and who would answer? देखो, गैसेस का मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे अगर कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें से एक गैस इवॉल्व हो रही है, और वो उस पे आप मैच स्टिक उसके पास लाते हो और आपको पॉप साउंड मिलती है, दैट मीन्स वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है और उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है, दैट मीन्स दैट गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी इवॉल्व होती है ना तो फिज के साथ, और वी कॉल इट एफरवेसेंस। ठीक है, फिज के साथ ये इवॉल्व होती है। ठीक है, और अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है जो कि सपोर्टर ऑफ कंबशन है, मान लो आप कैंडल बना देते हैं यहाँ पर, तो अगर कैंडल आपकी जल रही है उस गैस के प्रेजेंस में, ठीक है, तो कैंडल कैसे बनाए हम? आप लोग ज्यादा सुंदर कैंडल बना लोगे, दिस इज माय कैंडल, ओके। तो ये कैंडल, ये गैस यहाँ पास कर रहे हो तो कैंडल अगर जल रही है तो दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं यहाँ डाल दूं ना, तो दिस कैंडल
extinguishes. ये बुझ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड is not a supporter of combustion, but oxygen is a supporter of combustion, right? तो ऐसे आप गैसेस को डिटेक्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है आपके पास हाइड्रोजन गैस जिसकी पॉप साउंड आप ऑब्जर्व करते हो। Okay, then is while cleaning coins with dilute HCl, bubbles form around zinc coins but not copper coins. Tell me, zinc में आप और copper में आप acid put कर रहे हो, तो zinc plus HCl, copper plus HCl, this is giving you bubbles, but this is not giving you bubbles. What is the reason? Raise your hands who could tell. Bolo. Butler house, anybody? Would you like to answer? 11th question. Nobody. ये तो गलत बात हो जाएगी ना आपके house के लिए. Butler house, anybody? Your question is, while cleaning coins with dilute HCl, bubbles from around zinc coins, but not from copper coins are observed. आपके सामने रिएक्शन लिखा है, zinc plus HCl, this is giving you bubbles. Copper plus HCl is not giving you bubbles. What could be the reason? Because zinc is more reactive than copper. So answer is B, that zinc reacts with the acid. And this gives you ZnCl2 plus hydrogen. And these bubbles are formed due to the formation of hydrogen gas. But copper does not. फिर है, a student adds dilute HCl to magnesium ribbon and the test tube becomes warm. Why? Magnesium ribbon and HCl. So, if the test tube becomes warm, can you tell me what type of reaction is this? This is an exothermic reaction. Exothermic reaction क्या होता है? जिसमें heat release होती है. जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जो प्रोडक्ट बनती है और बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इसको आप बोलते हो exothermic reaction. Okay, come to 13th question. A test tube contains a blue solution labeled copper sulfate. An iron nail is dipped halfway into the solution. जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है. अब आप मुझे बताओगे, आपके पास इस टेस्ट ट्यूब में है copper sulfate and you're dipping iron nail, जो इसके half of it is dipped in the solution, rest half is not. So what happened? Iron nail is dipped halfway into the solution. Based on the diagram, what change will occur? After some time, solution becomes darker blue, or nail becomes silver in color, or nail gets coated with brown copper, or no change will occur. देखो, ये है Fe, iron, ठीक है? Which metal is more reactive? Iron is more reactive than copper. So when iron is placed in copper sulfate, because it is more reactive, this will
displace copper from here and this will form ferrous sulfate. Displacement reaction based on the reactivity. ठीक है, तो ये जो कॉपर है ये यहाँ पर बना इस रिएक्शन की वजह से. दिस कॉपर starts depositing on this. यहाँ कॉपर बनता जाएगा और इतने पोर्शन पे, क्योंकि ये रिएक्शन इतने पोर्शन पे हो रहा है, तो इतने पोर्शन पे इधर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता रहता है. ठीक है, बिकॉज इतने पोर्शन में वो रिएक्शन चल रहा है. सो you can write that nail gets coated with brown copper. Right? Now we come to this assertion reason part, which statements are given. Statement 22. Assertion says iron objects left outside get damaged easily. Yes, they get damaged easily because corrode ho jate hain, and iron forms loose porous oxide layer. Even the reason is correct. Okay. Next question. 23rd. Who will answer 23rd question? Question is, no bubbles are seen when copper is added to dilute HCl. And reason given is copper is less reactive than हाइड्रोजन. जैसे यहाँ पर हमने किया था, अब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है. तो अगर आप कॉपर को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, तो बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, copper is not able to displace H from HCl. ठीक है, तो अगर वो HCl को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, मतलब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा. This is because copper is less reactive than hydrogen. So both the statements are correct. 24th question. This is सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर. अब हमने देखा था कि जो सोडियम है वो बहुत रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे सोडियम के बाद, पोटेशियम के बाद सोडियम ही है. ठीक है, तो सोडियम बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है क्योंकि ये टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज में. So it says sodium is placed very low in reactivity series. So this is not true. वो लो नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट इज अमंग द टॉप वंस. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट. एंड इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिव विद वाटर, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. और लास्ट क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन. दिस इज मैग्नीशियम reacts slowly with cold water but quickly with hot water. अभी यहाँ पर हमने ये रिएक्टिविटी किया था, तो ये कहता मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ ये लेस रिएक्टिव. सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है. अदरवाइज मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, क्विकली. और रीजन दिया है हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन रेट. देखो टेम्परेचर बढ़ेगा हॉट वाटर का, यही है कि जो कोल्ड वाटर में नहीं रिएक्ट कर पाते, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ताकि हायर टेम्परेचर पे उस मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ सके. अब जैसे नीचे जाते रहते हो इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्गर कंडीशंस चाहिए रिएक्ट होने के लिए. तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनको स्ट्रॉन्गर कंडीशंस मिलेंगी. तो जो वैसे रिएक्ट नहीं कर पाते लो टेम्परेचर पे, वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो.
तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी इसी टेबल पे बेस्ड है और जो चीजें हमने डिस्कस की उसी से रिलेटेड है। तो आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी कॉपी पे लिखने हैं बेस्ड ऑन दिस टेबल और वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।